back. Uh, Today we will start. We will be starting with our classification algorithm, and we saw earlier that Titanic data set, where we handled missing data. हम लोगों ने काफी कुछ inferences निकाले using the visualization Seaborn library. Now, and in that we knew that survive whether the passengers gonna survive or not depends on what factor. Now we will create a model for it, model which you will predict given the features of a passenger such as gender, passenger class, and many other features that are relevant. The model should be able to predict whether the person gonna survive or not. What are the chances of the passengers survival? So in सब के लिए you will be needing some classification algorithm. Why classification algorithm? जब हम लोगों ने linear regression किया उस समय हम लोगों ने देखा कि जो डेटा था, जो चीज हमें टारगेट वैल्यू थी, टारगेट वेरिएबल था, दैट वाज सम काइंड ऑफ अ रियल वैल्यू, ईयरली अमाउंट स्पेंड. अमाउंट कैन बी एनीथिंग, अमाउंट कैन बी 30 रुपीज, अमाउंट कैन बी 300 रुपीज, अमाउंट कैन बी 350 rupees, 450 rupees. It can be anything, it can be any real value, right? But what about in the case of Titanic data set? Titanic data set mein we just need to know whether the passenger gonna survive, that is yes, or whether the person gonna die or not able to make it. That's it. We don't know how he will make it, what kind of he will make it. It doesn't matter. We just need the answer in yes or no. Means answer is a kind of a category. It can lie in the category of one, that is he will survive. That passenger can lie in the category that he will not survive, that is zero. So आपको जब इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जब आपका टारगेट वेरिएबल कुछ कैटेगरी होती है, मेल फीमेल, आपको अगर जेंडर प्रिडिक्शंस करने हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, दैट्स इट. मेल फीमेल या थर्ड कैटेगरी अदर्स. सो these are also category, कोई एक values नहीं है इसके corresponding. Same goes for you just want to predict the color. Color can be anything, color is a category. आपको अगर सैलरी प्रिडिक्ट करना है, किसी गिवन कस्टमर या किसी पर्सन की सैलरी आपको प्रिडिक्ट करना है, सैलरी, then you will be using linear regression or regression algorithms. But when the question is asked whether that person's salary is above the range of 50,000 or below the range of 50,000, now we are talking about category. Either a salary can be above or below, that's it, not in between, nothing. It can be either above or below. They are not asking you how much above, they are just asking you whether it will be above or below. That means they are asking in a form of a category. So you don't need that actual value of his salary, just need to know कि वो उस रेंज में कहाँ लाई करता है. जब इस तरह से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं, then you should be very careful about it. That's what the fifth step was, model selection. Model selection depends on these scenarios. What kind of scenario, what kind of target variable is available to you? If they are asking about real values, then you will go for the regressions. If they are asking about the category only, your model has to predict only the category, which category the current observation lies. That's it. Then you will be looking for the different classification algorithms. So first classification algorithm that we gonna learn is the logistic regression. Then on the same model we will apply decision tree and then random forest. Then we will compare all these three models, who is more suitable and who performs much better on a given data set, and how to evaluate them, how to compare them. These three things we gonna learn in this session. So let's start with knowing what is logistic regression. So logistic regression, despite its name, due to that regression, is a linear model for classification rather than regression.
Logistic regression is also known in literature as logit expression, that is maximum entropy classification or log linear classification. It means the we will be trying to find the probability. The answer given by the logistic regression is in a terms of probability. Now, what happens here is, if the probability of that function, what this function is saying, what is this z, we will discuss. But first, the value we got as an output of this function, if that value lies above 0.5, lies above this threshold value, that is 0.5, then it will be from a category 1 or 0. If we are talking about binary classifiers, binary means only two category, yes or no, male female, red blue, uh, approve not approve, approve rejected. So only two cases, two categories. So when we are talking about binary classifier, and if the probability or the value of this function will be a probability, so if this probability comes above 0.5, then it means that this particular observation जिसकी वो probability निकली है, that observation lies in a category 1. And if the probability belonging to that observation, that current observation, comes below the 0.5, then it means it belongs to the category 0. That's how we decide. And this 0.5 is known as threshold value. Threshold means it is some kind of a barrier. Above this, then this will happen. Above or below, if any value comes below it, then something different, right? So this is how a threshold is decided in logistic regression, and by default the threshold value is 0.5. So below 0.5 category different, above 0.5 category 1, class 1, label 1. There are so many names for our target variable. You can call it as a label 0, label 1, category 0, category 1, class 1, class 0. And but everything means that it belongs to a category. Now let's move further. Now we need data, right? And before going further, let's discuss a little bit maths behind this function. What this function is telling you, and what is this z. We saw earlier in our linear regression, the equation for linear regression looks like something like this, right? W0 plus W1x1 plus W2x2 plus and so on, right? Wn xn, when we are talking about n categorical n features, right? Data features. Y hat, I will call it as a y hat, is what my model will predict. ये जो target variable है, this target variable will be predicted by my model. Now, in this equation, this whole thing, logistic regression also uses the same equation, but this will become your z, not y. This will become your z. Now phi z, that function, this z will be taken as an input for this sigmoid function. This function is known as sigmoid. So how you will apply 1 upon 1 plus e to the power minus of, that is w0 plus w1x1 plus w2x2 and up to wnxn. This will become the equation of logistic regression. And what it now, this output of this equation will be a probability. It will be a probability, right? So if this probability comes above 0.5, then it belongs to the class 1. If this probability comes below 0.5, then it belongs to the class 0. That's how we decide. So, and this function, this equation is known, this function's equation is known as sigmoid function. So let's move further. Now let's see how we will apply this. Do we need to do some kind of a match? No.
Scikit Learn that we saw earlier, that we installed earlier for our linear regression. This Scikit Learn has every kind of module within it, whether it's a random forest model, whether it is decision tree, whether it is random regress or linear regression, and whatever it is. The Scikit Learn is basically is a hub for each and every model. So you just need one library to apply the different algorithms. Now first, before applying the algorithms and on, we need the data. So where is the data? If you remember, in a data visualization, we pull the Titanic data set. Now we will be working on the same data set for what? We will be working with famous Titanic data set for our logistic regression, because we will be use this data set to predict the survival rate of the passenger. That given these features, let's say gender, passenger class, and other features that we found in our visualization topic relevant, given all those features, what is the probability or whether that passenger is gonna survive or not, we need to find it. Now first of all, what we need to do is we have to import all the important libraries, that is pandas library, because we need to read the data, numpy library, matplotlib, cbon and matplot for our visualization part. We won't be focusing so much on this visualization because we saw in our visualization and worked on the same data set. So yeah, we will just have a quick review over it. Now we need the data, we have to read it. So pd dot read underscore csv, we will read this data set as train. Now let's see the first 5 rows of this data set, that means using the head method. Again we saw this data set. Let's move on. What are the number of rows or observations present? So it is around 892. So let's see. Let's come to the data explanatory part. We saw how many missing datas per features were there. So we saw that age column were having 177 missing values, and cabin was very large. Cabin had 687 missing values within them, and embark just 2. So what we did was we created a heat map to plot it to see if we are missing anything or if we did anything wrong here or not. So we plot a heat map. Always remember to plot a heat map of any data set if you want to know which feature or which column has a missing value in it. It's very suggestive. Okay, so we saw age, cabin and embark, but in that too roughly only 10 to 20% of the age data is missing. So we won't be dropping it. हम उसको पूरी तरह उन रोज को ड्रॉप नहीं करेंगे जहां पे एज कॉलम के अंदर आपको मिसिंग वैल्यूज रेज हो रही है, राइट? बट हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी रिप्लेसिंग दोज मिसिंग वैल्यूज, and that replacing known as imputation with what? With median or average, it's up to you. Okay, the propose and looking at the cabin column, what we found, out of 891 we have 687 missing values, and that is too much. So we won't be spending too much of time in cleaning that much of data. We will just pull it and drop the whole column out of it. So हम लोग अपने डेटा सेट में से ये कॉलम ही ड्रॉप कर देंगे. What about this embark? Embark column has only 2 rows having missing values in their embark column. So what we will do, we will just delete those rows containing missing values in their embark column. Okay, so this is what the inference means. This is very important before taking any decision, because your decision, the decision that you made here, will affect your model very drastically. So be very careful about it while imputing, while dropping, while replacing anything from your data. Why I am saying so, हम लोग age column को क्यों drop नहीं कर देते? Because
See, in total you have 891 around 890 or 891 around rows, and out of that हम लोग जब ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे we have to split the data into two parts, right? So अगर आपको लर्निंग अगर अपने मशीन लर्निंग मॉडल को लर्न करने के लिए इनफ डेटा नहीं दिया, हैविंग ईच वेरियस पैटर्न्स इन इट, तो आपका मॉडल रॉबस्ट नहीं बनेगा. इसलिए जितना हो सके उतना डेटा, अगर बहुत छोटा डेटा एंड इट्स वेरी स्मॉल डेटा सेट, वी जस्ट हैव अराउंड 800 891 समथिंग रोज. So if you have very limited data, you don't prefer, it's not good to drop everything. We have to preserve things, we have to replace, we have to generalize, we have to make some general decisions. Okay, so be very careful if your data set is very small, and in that if you can replace or impute some of the missing values, then do that. But in the Kevin case, 687 were the missing values, so it's of no use. Even if you impute thing, you are not sure then if whether your imputation gonna be correct or not. So that time this decision making affects your model a lot. So then we saw, after the plotting that heat map, we plotted some count plot to make a relation between survive, that is our target value. This target value depends on what kind of things in our, what kind of features that are present in our data set. We plotted survival column based on the gender. Then we saw, yeah, gender is very crucial, plays a very crucial role in its surviving and not surviving rate, because we saw that yeah, male has very less chances of surviving, and most of the people who died that day और जिनके बारे में आपके पास में यहाँ पे डेटा है, most of them were male. So yeah, male plays a very crucial role in our data set. Then we saw, what about the passenger class? Again we made a conclusion, we made an inference that yeah, passenger class also plays the very important role. That if the most of the people who died, who were not able to make, were from the class passenger 3. So yeah, again this is an important feature, we can't drop it. About what about the siblings and spouse? Again very important features. Most of the people who embarked on the who embarked from different places on the Titanic mostly were single, they did not have any siblings or the spouses with them, right? What about the embark from where they from where they boarded on the Titanic? So most of the people were from Southampton. Yeah, this is also an important part. Maybe this may play an important role, because you can see very large amount of population were from Southampton, so we can drop it, and it has a very nice relationship with our surviving rate column, which we need, which is our target variable. What about the age of the passenger? Yeah, again we can drop it, and because of that histogram of age, we concluded that most of the people were in the range of, उनकी एज किस रेंज में थी, बिटवीन द 20 to 30, और मिड 30s और अर्ली मिड 20s और अर्ली 30s. सो बहुत सारे लोग जो थे वो यंगस्टर्स थे. सो या हम लोगों के जो ये इन्फरेंसेस आर क्वाइट close to the what happened, because if you have read the case study about the Titanics, that it is there that most of the people were on who were there on the Titanic were in a range, were very young, okay, and they are like moving from one place to another place through this Titanic in a search of job. So yeah, that's why most of the people we found in our data set also belonging to in the within the range of 20 to 30, 35. Okay, so this is also plays an important role, and that too we saw that
age and passenger class also plays a very important and crucial role. We saw about the fare also. Fare, most of the people paid very less amount. So yeah, we can say कि ये जो लोग हैं जिन्होंने बहुत कम फेयर दिया था, maybe they must be belonging from passenger class 3, राइट. सो ये एक आपने इन्फ्रेंस बनाया था. उसके बाद में डेटा क्लीनिंग प्रोसेस के टाइम पे हम लोगों ने देखा था पैसेंजर क्लास 3 ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर यंग वर फ्रॉम पैसेंजर क्लास 3. एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं जब इनका मीडियन एज निकाला उस पर्टिकुलर ग्रुप वाइल ग्रुपिंग द डेटा सेट बाय पैसेंजर क्लास, तो एज कॉलम में मीडियन एज was coming was around 24 for the passenger class 3. What about the passenger class 2? It was around 29, and passenger class 1 it was around 37. So yes, my conclusion is correct that most of the people on the passenger class 3 were youngsters because the median was coming 24. You can also go for the mean value, average age, and also by plotting we prove this thing which we saw earlier through the group by method of the pandas, right? Now we will be using this knowledge to impute the missing values based on the passenger class. So we defined a function wherever the passenger class is 1 will return 37 at the missing value in the age column. Wherever the passenger, if that person belongs to the passenger class 2, then the missing value will be replaced by 29 and so on. इस तरह से हम लोगों ने एक फंक्शन क्रिएट किया था, right? So how to apply this function? We applied this function, yeah, एंड हम लोगों को इसको कॉलम वाइज अप्लाई करना था. एक्सेस 1 रखा. इस तरह से हमने एज कॉलम को डील करा, ड्रॉप किया था कैबिन कॉलम को एंड ड्रॉप किया था एनी रोज विच हैव एटलीस्ट 1 मिसिंग वैल्यूज. सो एक जो एम्बार्क कॉलम यहाँ पे था वो भी आपका ड्रॉप हो चुका है. नाउ वन मोर थिंग, हम लोगों का मशीन लर्निंग मॉडल दे डोंट नो टेक्स्ट टाइप डेटा. अभी हमारे केस में जेंडर वगैरह मेल फीमेल इट्स अ टेक्स्ट टाइप. वी नीड टू एनकोड देम. एनकोड मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट into a dummy variables into terms of numerical values, dummy numerical values. So आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. इट इज वेरी मैंडेटरी स्टेप कन्वर्टिंग द कैटेगरिकल फीचर्स, अगर कैटेगरिकल फीचर्स आपके टेक्स्ट टाइप के होंगे. ओके, सी पैसेंजर क्लास वॉज ऑल्सो अ कैटेगरी. आपका सर्वाइव निकालना जो टारगेट वैल्यू इज ऑल्सो अ कैटेगरी. फिर उसके बाद में आपका फेयर एज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज. बट gender is also a category but they were written in a text data, right? Male and female. बिल्कुल same goes for your embark में s q c. तो मशीन लर्निंग इसको समझ नहीं पाएगी. you have to encode them. फिर encode करने के लिए हमने इसके डमी वेरिएबल्स क्रिएट किए थे यूजिंग द pandas लाइब्रेरी. डमी वेरिएबल्स में हम लोगों ने एक चीज और देखी थी. वी हैव ड्रॉप डमी वेरिएबल्स का एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके उस कॉलम में 2 कैटेगरीज है तो आपके 2 नए कॉलम बन जाते हैं. अगर आपके पास में एक जेंडर कॉलम है एंड विद इन दैट जेंडर कॉलम यू हैव 2 कैटेगरीज मेल एंड फीमेल, राइट? सो जब आप डमी वेरिएबल्स पैंडास का डमीज निकालते हो तब आपका वो एक कॉलम गेट कन्वर्टेड इनटू अ 2 कॉलम्स, 1 कॉलम मेल एंड अदर कॉलम फीमेल. इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज मेल, अगर किसी पैसेंजर इज अ मेल, so male column में there will be 1 and female column में there will be 0. now हम लोगों को मशीन ये जो कोरिलेशन है कि अगर फीमेल के इसमें 1 है तो ऑटोमेटिकली मेल के अंदर 0 होगा, मेल के अंदर 1 है तो ऑटोमेटिकली फीमेल के अंदर 0 होगा. वी नीड टू हाइड दिस कोरिलेशन ऑल्सो फ्रॉम द मशीन and let the machine decide about this correlation. So what we will do, we will drop, if you have 2 categories then you will be making 2 columns, we will just drop 1 column. Drop first equals to true will drop. If you have 2 columns, because of the 2 category will drop any one, it will drop the first column that he has made. When you have 3 categories, he will drop the first category column and the remaining 2 columns will be there belonging to the 2 categories. तो इस तरह से आप 2 चीजें जरूरी है drop first equal to true करने में. डमी वेरिएबल्स ने इस तरह से आपको इनकोड किया. नाउ वी जस्ट ड्रॉप द अननेसेसरी कॉलम्स एंड कॉन्कैटिनेटेड दिस
new version of gender and embark column, and now our model is very nicely prepared, pre-processing हो चुका है. Now we will build our first logistic regression model. How we will do it? We have to split the data into training and testing. So if I draw, if I told you some diagrammatically, you have this data, what will happen now? This is your data. You will divide this data into two parts. This part will be your training. This part will be your test. Now let's take this testing part out. हम लोग इस टेस्टिंग पार्ट को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे. इट इज नाउ हिडन फ्रॉम द मशीन, और we will take this training part and will train our logistic model. अब ये स्प्लिटिंग कैसे करते हैं? जब आपके पास पे मॉडल, आपके पास में डेटा कम होता है, राइट? जब आपके पास में डेटा कम होता है तो ऑलवेज गो फॉर 60-40. जब आपके पास में एबंडेंट डेटा होता है, मतलब 10,000 रोज है, 10,000 ऑब्जर्वेशन है, देन वी टेक 70-30 और 80-20, क्योंकि 80% एंड 20% ऑफ 10,000 इज मच मोर. आपको काफी चीजें मिल जाएंगी लर्न करने के लिए. बट इफ यू हैव अ वेरी लिमिटेड डेटा, देन वी ऑलवेज गो फॉर 60-40 और 70-30 रेशियो. 70% of the total data will be given to the training as a training purpose, and 30% of the data will be going for the testing purpose. Now अब 70-30 ये जो splitting होता है, it happens randomly. ऐसा नहीं होता है कि पहले अगर आपके पास में 100 रोज हैं तो फर्स्ट 70 रोज को अपन ने ट्रेनिंग में डाल दिया एंड रिमेनिंग नीचे की 30 रोज को अपने टेस्टिंग में डाल. नो, दिस डजंट हैपन. व्हाट हैपेंस इज your model algorithm, we will see what algorithm will pick the 70 rows randomly out of 100, so that अगर रो विद इन द रोज भी, दो रोज के बीच में भी कोई कोरिलेशन होगा, वो भी आप क्या कर देते हो, यू जस्ट रिमूव दैट कोरिलेशन. सो आपका ये जो आप स्प्लिटिंग करते हो, तो 70 रोज, अगर मैंने 100 माना कि लेट्स से आवर डेटा हैज 100 रोज, so 70 rows will be going for training purpose, and these 70 rows will be pulled randomly. इन 70 rows के अंदर मॉडल ट्रेन होगा, and after training if our model is showing very good sign, अब हम लोग टेस्टिंग, दैट इज इवैल्यूएशन करेंगे. इवैल्यूएशन में हम लोग यहां का जो एक्स टेस्टिंग फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, वो टेस्टिंग फीचर हमारे मॉडल के फॉर्मूले में रखेंगे, फिट करेंगे उसको, एंड उसके थ्रू हम लोग इस सभी फीचर्स के करस्पॉन्डिंग टारगेट वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट करेंगे. ओके, इनको प्रिडिक्ट करेंगे एंड विल कंपेयर दिस प्रिडिक्टेड वैल्यू विद द रियल टेस्टिंग टारगेट वैल्यूज, जो रियल में भी इनकी एक्चुअल वैल्यूज थी. ये जो नए 30 वेरिएबल्स है, 30 ऑब्जर्वेशन है, जिनका पैसेंजर क्लास ये होगा, पैसेंजर क्लास के बाद उनका जेंडर में भी मेल होगा, उन सब के ऊपर हम लोगों ने प्रिडिक्शन किए कि उनका सर्वाइविंग रेट क्या होगा, वेदर दे गोना सर्वाइव और नॉट, 1 और 0. नाउ हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट ये किया है, और उनमें एक्चुअली व्हाट हैपेंड विद देम इज योर टारगेट वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू देम, right? We will compare this, and अगर मोस्ट आउट ऑफ दोज 30, अगर आपके मॉडल ने 27-28 अगर बहुत अच्छे से दिया है, वी कैन से our model has performed very much good, very very good, and it is deployable because आपके आउट ऑफ 30 आपके मॉडल ने मे बी 25 या 28 सही से प्रिडिक्ट करे. सो सही से प्रिडिक्ट करे मतलब अगर टेस्टिंग रियल वैल्यू अगर उस पर्टिकुलर पैसेंजर की वो क्लास 0, दैट इज वो पर्टिकुलर पर्सन वाज नॉट एबल टू मेक, और आपके मॉडल ने भी गिवन द
उस पर्टिकुलर पैसेंजर का डेटा आपकी मॉडल ने भी वही प्रिडिक्ट किया है, तो योर मॉडल इज वेरी गुड, योर मॉडल इज नॉट मेकिंग एनी एरर। यही हम लोग इवेल्युएशन पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स मूव टू अवर लॉजिस्टिक बिल्डिंग द स्प्लिटिंग द डेटा सेट। सो आप स्प्लिट कैसे करोगे? फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। you don't have to worry about it कि आपको split करना पड़ेगा randomly, you have to make some kind of a function. No, it is available to you. So what you have to do is, from sklearn you have to import it, right? From sklearn dot model underscore selection import train underscore test underscore split. We saw this in our linear regression. Now how to apply them? Train test split takes two arguments. The first argument is your training data, training आपका जो main data set है वो, without the target variable. So we are dropping survive column, that is our target variable, from axis equals to 1, and comma the second argument is your target variable in the data set. So आपका second argument में सिर्फ target variable रखा है. Test size is the third argument. Test size is means if you are saying 30%, so 30% of the data will be randomly pulled and given for the testing purpose, or hidden, will be hidden. Random state, very important. It is just like the seed function that we saw in our NumPy. What happens is, whenever we come across any random thing, see ये जो splitting हो रहा है, it is happening randomly. So what will happen, अगर आपने ये notebook आज, so randomly अगर आपने ये किया, तो ये नोटबुक अगर आपने आज बंद कर दी, सी अभी एक मे बी यस्टरडे लास्ट ट्यूसडे मैंने इस जुपिटर नोटबुक को क्रिएट किया था, उस समय स्प्लिटिंग हुआ था। ओके उस समय ट्रेनिंग में मे बी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज गई होंगी, उस समय कुछ अलग ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग में गई होंगी। प्रॉब्लम इज, अब अगर मैंने रैंडम स्टेट उस समय फिक्स नहीं किया होता, दैट इज 101 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, सो व्हाट वुड हैपन कि अगर आज फिर से मैं रन सेल्स या रन ऑल करती, तो मुझे टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में डेटा फिर से डिफरेंट मिलता, एंड इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। मुझे अगर ये प्रॉपर प्रोडक्शन में आगे भेजना है, ये मॉडल सपोज मेरा बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, मुझे बस एक बार टेस्टिंग पर्पस के लिए फिर से चलाना है, सो व्हाट वुड हैपन, मुझे फिर से ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में जो स्प्लिटिंग हो रही है डेटा की, ये फिर से नया टाइप के रोज और कॉलम स्प्लिट होते हैं। मतलब अगर मैंने बोला कि अगर आप रैंडमली 70% ऑफ द डेटा चूज कर रहे हो एंड वो ट्रेनिंग में जा रहा है, सो सपोज लास्ट टाइम मेरा फर्स्ट एंड फिफ्थ रोज ट्रेनिंग में गई थी, वन ऑफ द 70 रोज फर्स्ट एंड फिफ्थ रोज मेरी उनमें थी। आज अगर मैं फिर से इसको रन करूंगी, तो अब मे बी फर्स्ट रो अभी भी ट्रेनिंग में, फिफ्थ रो मेरी टेस्टिंग में चलेगी, सो आई डोंट वांट दैट, सो आई विल हैव टू फिक्स रैंडम स्टेट। नाउ व्हेन आई विल रन इट, ये आपका रन होगा, उसके बाद में आपको ये 4 वेरिएबल्स मिलेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे देखा था 4 वेरिएबल्स में वैल्यूज को कैसे फीड करते जाते हैं, यहाँ से उठेगा एक एक करके वैल्यू, ट्रेनिंग टेस्टिंग वाई ट्रेन वाई टेस्ट में जाएगा। नाउ वी हैव टू मेक अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो फ्रॉम sklearn dot, again logistic regression is basically a linear model. We saw the equation, right? It was a linear. आप उसके ऊपर सिग्मॉइड फंक्शन यूज करके उसको या तो प्रोबेबिलिटीज को यूजिंग दैट थ्रेशोल्ड वैल्यू 1 और 0 में कन्वर्ट करते हो, बट बेसिकली इट्स अ z जो वैल्यू थी, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, राइट? सो फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल, लीनियर अंडरस्कोर मॉडल, वी विल इंपोर्ट दिस क्लास। आफ्टर इंपोर्टिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मैंने मेंशन करी है, मैक्सिमम इटरेशन इज इक्वल्स टू 700। इट मीन्स आपका मॉडल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल विल गो ऑन दिस एक्स ट्रेन, कितनी बार लर्न करेगा पूरा? अगर एक्स ट्रेन में 70 रोज सपोज मैंने बोली, एक्स ट्रेनिंग में 70 रोज हैं, एक्स टेस्टिंग में 30 रोज है, तो ये 70 रोज से वो जो लर्न कर रहा है, वो कितनी बार उसके ऊपर विल गो थ्रू, इट विल इटरेट ओवर दैट ट्रेनिंग डेटा 700 टाइम्स। इट्स अप टू यू, इट्स अ ऑब्जेक्ट पैरामीटर, ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट, इट्स अप टू यू। आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं यहाँ पे, कितनी बार आपको इटरेशंस कराने हैं पर्टिकुलर ट्रेनिंग के ऊपर से टू परफॉर्म, सो दैट इट मे परफॉर्म बेटर इन द होप ऑफ
ज्यादा लर्न कर सके, बार बार रिपीट करेगा उन सबको, तो जो पैटर्न फर्स्ट टाइम इटरेशन पे मिस हो गया होगा वो सेकेंड टाइम में पिक करेगा, जो सेकेंड टाइम में मिस हो गया वो थर्ड टाइम इटरेशन पे करेगा, एंड सो ऑन. Now we have created our object. Now let's the use this object के अंदर जो fit method आती है to fit the training data. कौन सा data आएगा? X train and Y train. This data will be responsible for our learning of the model. अब एक्स जो टेस्टिंग डेटा है वो कुछ इस तरह से है. यू कैन सी हियर दीज रोज आर रैंडमली पुल्ड. आपका 511 वाली रो का पैसेंजर आईडी 512 का था, पैसेंजर आईडी 614 का डेटा आपका टेस्टिंग में गया, पैसेंजर आईडी 338 का डेटा उसके बाद में गया. सो एवरीथिंग इज हैपन रैंडमली. नाउ वी विल मेक द प्रिडिक्शन ऑन दिस टेस्टिंग डेटा कि गिविंग द फीचर. यहाँ पे आपको सर्वाइव कॉलम नहीं दिखेगा. सर्वाइव के बारे में आपका मॉडल इसको प्रिडिक्ट करके देगा. एंड जो एक्चुअल में इनका स्टेटस था, वेदर दे सर्वाइव, दिस पैसेंजर आईडी जो था 512, वेदर दिस पर्सन सर्वाइव और नॉट, आपका मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा. एंड उसकी जो एक्चुअलिटी, जो एक्चुअल में उसके साथ हैपन हुआ था कि जो वो सर्वाइव किया था कि नहीं किया था, वो जो टेस्टिंग रियल वैल्यू थी उसकी इस पर्टिकुलर पैसेंजर आईडीज के करस्पॉन्डिंग, उनका जो रियल स्टेटस था वो कंपेयर होगा हमारे प्रिडिक्शंस के साथ में. तो आप क्या करोगे? लॉग मॉडल डॉट प्रिडिक्ट ऑन द हिडन डेटा, टेस्टिंग डेटा, और फिर प्रिडिक्शंस कुछ इस तरह से दिखेंगे 1001 101010. नाउ वी विल सी हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्टली प्रिडिक्टेड. मतलब आप इवैल्यूएशन करोगे. So from sklearn.matrix, now evaluation comes in the matrix part. How good is your data? You have to perform that, right? So from sklearn.matrix module, we will import the classification report as well as confusion matrix. What is confusion matrix? What is classification report? We will see below here. क्लासिफिकेशन रिपोर्ट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, रियल वैल्यूज, रियल टारगेट वैल्यूज जो एक्चुअल में हुआ था, एंड आपके मॉडल ने जो प्रिडिक्ट किया है. नाउ वी विल कंपेयर दिस हाउ प्रिसाइजली. हाउ प्रिसीजन मीन्स आउट ऑफ 163 जो डेटा है जो जीरो थे, जिनका रियल स्टेटस जो सर्वाइव नहीं कर पाए थे, इट मींस देयर रियल स्टेटस वाज जीरो. आउट ऑफ दोज 163, how precisely your model has predicted? So 0.82, that is 82% precisely your model predicted these 163 data correctly. What about 104? This 104, out of all these testing data, 104 जो पैसेंजर्स थे उनका स्टेटस क्या था? दे सर्वाइव, दैट इज इट इज 1. So how precisely our model predicted? 84%, that is 0.84. Or you can see here F1 score. So these are just the how precisely, the accuracy, ये सब के बारे में आपको नॉलेज देता है. Now let's come to the part कि ठीक है, okay, precision, okay, percentage ways में ठीक है, but exact value out of 163, how many observation our model has correctly classified? अब ये देखते हैं. Out of 163, 163 means yours class 0, the passenger who were belonging from the class 0. Out of 163, those 163 observation आपने कितने correctly predict करे? So उसके लिए there is a confusion matrix, contingency table भी बोलते हैं इसको. So out of 163, 149 our model has predicted correctly, and 14 के इसमें आपने miscalculation किया है, misclassification किया है, right? 71 out of 104 our model has predicted correctly, and 33 के बारे में हमारे मॉडल ने गलत predictions किए हैं. अब ये मैं क्यों बोल पा रही हूँ दिस इज द क्लास 1 से बिलोंग? तो आपको इस तरह से कुछ कंटिंजेंसी टेबल दिखता है. लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस once again. Yeah, this is 0. Okay, let me just draw this again. यहाँ पे मैंने एक कंटिंजेंसी टेबल बनाई. ये आपका जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है, इट इज समथिंग लाइक दिस. ये AC0 इज एक्चुअल वैल्यू, actually who were belonging to the class 0.
आउट ऑफ देम जो और आपके मॉडल ने भी सही से उनको क्लासिफाई किया है, दैट इज हाँ वो एक्चुअल में भी 0 से बिलोंग करते हैं, आपका मॉडल का प्रिडिक्शन और वो उनका रियल स्टेटस। सो आपने सिर्फ 149 के बारे में आपके मॉडल ने सही से प्रिडिक्ट किया है आउट ऑफ 163, बट 14 के बारे में आपके मॉडल ने मिसक्लासिफिकेशन किया। आपके मॉडल ने दे हैव पुट 14 ऑब्जर्वेशन इन क्लास 1, दैट इज उनका स्टेटस उन्होंने सर्वाइविंग बताया है, बट एक्चुअली रियलिटी क्या थी, दे did not or were not able to survive, right? What about this 33 71, आपके मॉडल ने आउट ऑफ 104 करेक्टली क्लासिफाई किए थे और उनको क्लास 1 से बिलोंग करना बताया था। आपके प्रेडिक्शंस और उनकी रियलिटी दोनों मैच कर रही थी। आउट ऑफ 104 कितने लोगों का क्लासिफाई सही से किया था? 71, बट 33 पीपल योर मॉडल predicted wrongly, misclassify उनके बारे में किया। according to your model they were not able to make it because आपके मॉडल ने उनको क्लास 0 में रखा, बट उनकी रियलिटी कितनी क्या थी? they actually survived. So this is your misclassification. These two things are your misclassification. What will be our next target is आपको ऐसे मॉडल सर्च करना होंगे या मे बी इसके अंदर कुछ चेंजेस करना होंगे ताकि ये मिसक्लासिफिकेशन जो है इट शुड बी पुल्ड डाउन। 14 है तो मे बी नया मॉडल ऐसा आए कि जिसको 10 मिसक्लासिफिकेशन हो। 33 अगर यहाँ पे मिसक्लासिफिकेशन करे तो मे बी इसको हम लोगों को और खींच के नीचे लेकर आना हो, मे बी 28 मिसक्लासिफिकेशन हो। ये आपकी कंटिंजेंसी टेबल या कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको एक आइडिया देती है हाउ गुड इज योर मॉडल। So we will be continuing this discussion with the decision tree and random foreign in a search of a, a better model. And is there any better model than the logistic regression that will perform much better than on the same data set as compared to logistic regression model? We will see that.